नहीं नहीं ले रहा। एक मिनट, कुछ तो भी आया था अभी, या ऐसा आ रहा है? टॉप लेफ्ट ऐसा हमें नहीं दिखेगा शायद, वो टॉप लेफ्ट में आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन रहेगा डॉट, हमें नहीं दिखेगा। हाँ एक मिनट। हाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, उसको ऑन कर दूं? हाँ सर। हाँ एक मिनट। ठीक है, नहीं हो रहा है, आज के दिन रहने देते हैं वैसे ही। आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन नाउ। माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes. ठीक है। I think last time I have done with the this one the basic blocks of 8051. So let me show you that block. So everyone please pay attention now. Yes. So I was talking about this block diagram of 8051. So we have already studied this block diagram. I have told you the 8051 microcontroller consists of different blocks. So if you want to see this, yes. So if you see carefully, you'll be able to understand that you have everything on a single chip. So this every block of your block diagram is present in your 8051 microcontroller chip. So you will have a CPU, you will have a RAM, you will have a ROM, you will have IO port, you have a timer, you have a serial communication port. So a single chip microcontroller. So everything is embedded in this particular chip. Okay. And see here, mostly we deal with 8051 microcontroller, and the manufacturer of this is, can you see here on the chip, it is written here Atmel. So Atmel is the manufacturer of this IC, and mostly we go with Atmel only. Okay. और हम जब अभी किल में प्रोग्राम करते हैं, वो अगर मुझे बर्न करना है, so we will be having the program which will be burned into this Atmel. Okay, this will be burned into Atmel. So when you talk about this, हम जब पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि this is a 40 pin IC, this is a 40 pin IC, and we will be also able to see the function of each and every pin, the function of each and every pin. So in short, I can say you have this block diagram embedded in this in a single chip, Okay, we have also seen the features. So the features like it has a 4 kilobyte of internal ROM, it has 128 bytes of internal RAM, then it has a 4 8-bit IO port 0 to port 3, so P0 to P3. Then it has a 2 16-bit timer and counter. Okay, and it has a 1 serial interface. So this already we have studied in the block diagram. So in the block diagram, just briefly let me go through the block diagram so that it will be more clear. Yes. So when you talk about this block diagram, whenever you talk about this block diagram, you will be able to understand that it has two timer, it has a RAM. So it has the timer 1 and timer 2. It has 128 bytes of RAM. It has a 4 kilobyte of ROM. Then it has 5 total interrupts. 3 internal interrupts are there. We will see the names of those. And we have 2 external interrupts. So these are the 2 external interrupts and 3 internal interrupts. So total there are 5.
Then we have a CPU. In the CPU you have ALU. तो CPU का जब हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था उसमें हमने जो जो पढ़ा था everything is available in the CPU. Then we have also seen that we have a serial port for transmitting of data serially. So we have two pins for that. When you want to serially transmit the data, it will be transferred through TXD. And when you have to receive the data serially, it will be received through RXD. So transmit and received, TXD and RXD. Then you have total 4 ports. This is for parallel communication. So 4 ports. So each port consists of 8 bits. 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. So total 8 into 4, 32. 32 bits are there. And in that, and in this, we have also seen that port 0 and port 2. Let me check. Port 0. Yes. Port 0 and port 2. This port 0 and port 2. These are the two dedicated IO ports which are used for address as well as data. तो हम जब एड्रेस या डेटा भेजेंगे that will be through this port 0 and port 2. Such type of question can be asked as a viva question. Okay, so which are the two dedicated ports for address and data? It is P0 and P2. Okay, then we have also seen the control bus. We have also seen the control bus. In this control bus, I have told you the dedicated control pins are RD bar, then you have WR bar, then you have ALE. I have told you that ALE and the other pin I will explain you afterwards. So ALE and PSEN. PSEN. This ALE is active high, PSEN is active low. So there should be a bar. There should be a bar. RD is active low, so there is RD bar. WR is active low, so you have a WR bar. Similarly, you have PSEN bar. So these are the 4 control pins or control signals. Okay. Then even I have told you you have an oscillator. Regarding the oscillator, when आपको बताया था कि this 8051 is having an internal oscillator, आपको अलग से एक सर्किट लगाना पड़ता है. And that circuit consists of what? It consists of your external resonant circuit. This is called as the external resonant circuit. इसमें आप अगर आपको देखोगे तो you can see here there is a quartz or there is a crystal. It is a we say it is a quartz crystal. It is a quartz crystal. Okay, and why do we require this oscillator? Why do we require this quartz crystal? Because all the operation of your 8051 will be in synchronization with the clock pulse. तो आपको वो क्लॉक पल्स कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा ये यहाँ से क्वार्ट्ज या फिर we say quartz crystal से. So usually we have to have this 12 megahertz. 12 megahertz. So as far as your 8051 is concerned, you will be getting the clock frequency of 12 megahertz. 12 megahertz. Actually 12 megahertz बोलते हैं, लेकिन हमको जो मिलता है that is 11.0592 megahertz. So एक राउंड फिगर में हम 12 मेगाहर्ट्ज बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको 11.0592 मेगाहर्ट्ज मिलता है. ओके, सो दिस क्रिस्टल oscillator frequency, the crystal oscillator will give you the 11.0592 megahertz. This is actually हमको externally connect करना पड़ता है, and that is given to the oscillator, and this oscillator is part of the IC. आपका ये जो ब्लॉक डायग्राम है IC के अंदर ये सब चीजें होती है और अलग से हमको एक क्वार्ट्स लगाना पड़ता है. ओके, सो दैट इज द ऑन चिप ऑसिलेटर सर्किट. तो ऑन चिप ऑसिलेटर सर्किट में ये ब्लॉक डायग्राम होता है और अलग से हमको क्वार्ट्स क्रिस्टल लगाना पड़ता है 12 मेगाहर्ट्ज का. ओके, टू मेक अ कंप्लीट ऑसिलेटर. रिमेंबर, सिर्फ ऑसिलेटर से काम नहीं चलता है, एक्सटर्नल हमको लगाना पड़ता है रेजोनेंट सर्किट. द रेजोनेंट सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ क्वार्ट्स क्रिस्टल ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज, और ऑसिलेटर and your external resonant circuit will together give you a complete oscillator, and you will have 12 megahertz as a clock frequency, which will be given to the CPU, because CPU के अंदर में you have all the operation done. It can be arithmetic operation, it can be logical operation, it can be data transfer, it can be anything. Because remember, every operation of your which is taking place in the CPU will be always in synchronization with your clock pulse. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone now so far?
Any question, please ask me. Any question, please ask me. Any question? सर इस ब्लॉक डायग्राम की डिटेल वर्किंग है आपके पास? Detail working, this thing I will be, I think I have showed you with Patel. Okay. So ebook I have already shared. Manish Patel, the book I have ebook already I have shared. So whatever I have explained you right now, that is already I have taken from Manish Patel book. So you can refer this Manish Patel book, okay, for the detail of these blocks. I think I have that on the screen itself. Yes, this is a Manish Patel. Can you see a 8051 microcontroller Manish Patel? So this ebook already I have shared with you in the classroom. So go through that, you will be able to understand. तो मैंने जो लिया था ना, let me show you that block diagram. Yes, this block diagram. Okay. So if the question is asked in the exam to explain you the block diagram, you draw this, because there is a detailed block diagram also. So detailed block diagram मैं नहीं ले रहा हूँ, because unless and until I explain you the pin configuration, I cannot go to the detailed block diagram. Okay. So if the question is asked, you can straight forward, you can draw this block diagram and you can explain each and every block. Is it fine? Is it fine? Yes sir. Okay. Now we have done with the block diagram, or this block diagram I have explained you in brief. इनकी detail में understanding in consecutive lectures I will be explaining you in detail. जहाँ पे will be encountering the blocks. Okay. Now I can proceed further to explain you. If you want to just go through, if you want to just see the detailed block diagram, that is called as the architectural block diagram, I will be able to show you now. See here, this is 8051 architectural block diagram. Yes, see, this is the architectural block diagram. This is in detail. लेकिन ये आपको सब नहीं समझ में आएगा unless and until I take the pin diagram, unless and until I explain some of the important concepts, then I will come back to this block diagram. Okay, but if you see this architectural block diagram and the block diagram which I have explained you, the simplified one, they are one and the same, but this is in detail. Okay, for example, if you see here, can you see here, this is timing and control, and can you see here, there is a PSEN bar, there is ALE, there is EA bar, there is RST. Okay, can you see here, there is port 1, there is port 3 is there. Can you see here port 1, that is P1.0 से लेके P1.7, that means there are total 8 bits are there. For port 3, this is called as individual pins, P3.0 से लेके P3.7. Okay, यहाँ पे आगे में भी you will be having some port 1 हो गया, port 2, 3 हो गया, port 2 देखो कहाँ पे, ये देखो port 2. This is port 2 latch, उसके dedicated देखो 8 bits. Port 0 का देखो, you have dedicated 8 bits. Okay, so similarly, can you see there is a RAM, there is a ROM, can you see there is an accumulator? You know the accumulator is present in the CPU. Okay, but here it is in detail one. Okay, तो जब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, that time I will be able to explain you this in a proper manner. So presently I am not going to explain you this in detail. Okay, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे ये बात. So now I can proceed further to make you understand the programming model of 8051. So I want everyone to write down in your register programming model of 8051. Programming model of 8051. Programming model of 8051. Now what is the meaning of this programming model of 8051? Before I explain you, let's see the model. Let's see the model.
Let's see the model first. Yes. So this is a programming model. This is a programming model. So as far as 8051 is concerned, tell me the size of internal RAM. Tell me the size of internal RAM. Internal RAM का size कितना है? Internal RAM. That is also called as a data memory. उसका size कितना है internal RAM का? For 8051. 128 bytes. Yes, it is 128 bytes. 128 bytes. Now I can say your 8051 contains 128 bytes of on-chip internal RAM या फिर on-chip data memory. On-chip data memory. So this on-chip data memory I can be able to show you here. Okay, 128 bytes. So your 128 bytes of internal RAM is seen here. ये देखो, ये दोनों मिला के internal RAM है. ये दोनों मिला के internal RAM. Okay, 128 bytes. 128 bytes. I want everyone to have a keen observation. आज जो मैं ले रहा हूँ वो डिटेल में ले रहा हूँ. Okay, and you should be able to understand this concept now. Now this 128 bytes जो internal RAM है. Okay, so this internal RAM, already I have explained you some of the concept of this, that it has a register bank 0, register bank 1, register bank 2, and register bank 3. Okay, so I will show you everything here now. If you see carefully, see the address. Let me zoom this. इसको zoom करता हूँ so that it will be visible properly. सबको क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Now pay attention, everyone. Now, if you see carefully, you have an address 00H. This is in hexadecimal. This is in hexadecimal. Okay. अगर इसको मुझे बिट्स में बताना है 00 को, I can show this as 0000. I can show this as 0000. Okay. So when you show this 00 as in the bits form 0000, so the first location is your R0. The first location is R0. So your register bank 0 is from address 00H to 07H. So 00H contains R0 register. Now tell me the size of R0 register. मैंने वो भी बताया था पिछले लेक्चर में. Tell me the size of R0 register, register 0. उसका साइज कितना होता है? Tell me the size of R0. This R0 I'm talking about. Yes. 8 bits. 8 bits. Yes. 8 bits. So R0 is of your 8 bits. Similarly, R1 8 bits, R2 8 bits, R3 8 bits. So if I tell you that your address from 00H to 07H, there are total 8 bytes. There are total 8 bytes. So total 8 bytes are dedicated for register bank 0. These are total 8 registers R0 to R7 are reserved for register bank 0. So the total size is of 8 bytes, or if I want to show in 8 bits, so it is 8 8s are 64. So total 64 bits from R0 to R7, या फिर बोलो from memory address 00H to 07H. Now what is there from 08H to 0FH? This is also similarly here also you have R0, R1, ... R7. So the memory address from 08H to 0FH, that has total 8 bytes, that is from R0 to R7, they are reserved for register bank 1. They are reserved for register bank 1. Similarly, the memory address from
10H. We will not say 10. हम 10H नहीं बोलेंगे, वो 10 बोलना पड़ेगा आपको. Okay, because it is an hexadecimal. So 10H. 10H. Okay. So from 10H to 17H. 10H to 17H. This is reserved for register bank 0. Similarly यहाँ पे भी वही है, R0 से लेके R7. एक बात याद रखना, ये R0 अलग है, ये R0 अलग है और यहाँ का R0 अलग है. ये R0 रजिस्टर बैंक 0 का है, ये R0 रजिस्टर बैंक 1 का है और ये R0 रजिस्टर बैंक 2 का है. ओके. सिमिलरली रजिस्टर बैंक 3 is from address 18H to 1FH. ओके. सो आपके 4 रजिस्टर बैंक यहाँ पे रिजर्व्ड है एंड यू शुड नो दिस बाय हार्ट. मैं अगर बोलता हूँ कि एड्रेस लोकेशन बताओ रजिस्टर बैंक 2 का, यू विल से सर इट इज फ्रॉम 10H टू 17H. मैं बोलूंगा अगर मुझे बताओ एड्रेस लोकेशन ऑफ रजिस्टर बैंक 1, यू शुड से सर इट इज फ्रॉम 08H टू 0FH. ओके. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, और एक बात है, दिस इज रॉन्ग. मैंने ये जो बनाया था, इफ आई हैव टू शो दिस इन बिट्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1FH है, ये हेक्साडेसिमल में, उसको मुझे बिट्स में बताना है, तो इट विल बी 1 1 1 1 एंड फॉर 1 इट इज 0 0 0 1. So this will give me 1 and this will give me F. So this is in the bits form. This is in the form of bits. Okay. और जो आपको दिख रहा है वहां पे, it is in the form of hexadecimal. Okay. So अगर मुझे टोटल 8-bit मेमोरी लोकेशन फॉर्मेट में बताना है, तो इट इज 0 0 0 1 1 1 1 1, because 0 0 1 will give you 1 and 1 1 1 1 will give you F. So 1FH, that is hexadecimal. Okay. यहाँ तक सभी को क्लियर है? Everyone has understood this till now? I am explaining you internal RAM of 128 bytes. आपका internal RAM में you know how the memory addresses are divided and they are reserved for what purpose. That thing I am explaining. Shall I proceed further if you don't have any questions? Yes. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see here, you have the other area which is called as bit addressable area. This is called as a bit addressable area. अब bit addressable area कहाँ से कहाँ तक है? It is from 20H और 20H से लेके 2FH. 20H से लेके 2FH. अगर मैं पूछता हूं आपको कि ये टोटल कितने बाइट का है, कैन एनीवन ऑफ यू गिव मी द आंसर? कितने बाइट का है? BYTE बाइट्स, कितने बाइट्स का है? Yes, I am waiting for the answer. You will get the answer if you see. You have to go from 20H to 2FH. 16 Yes, 16? byte. Yes, 16 byte. 16 byte. Okay, 16 byte. Now if I ask you, tell me how many total bits are reserved for bit addressable area. Total number of bits. It is 16 into 8. It comes to be 120. 120. Yes, 128 bits. 128 bits. Okay. तो bit addressable area क्या काम के लिए है? That thing we will see afterwards. Okay. सिर्फ इतना याद रखना कि bit addressable area is from memory address location 20H to 2FH. It means there are total 16 bytes. Okay. Every byte is of 8 bit. Okay. So I can say 20H 1 byte. Tell me the next address location after 20H. 21H. Yes, 21H, then 22H, then 23H. बराबर है? Then dot 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 dot, you will go till 2FH. So you are going from total first byte to 16th byte. First byte to 16th byte. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? So, can you explain the logic of 16 byte? Logic of 16 byte.
लॉजिक ऑफ 16 बाइट का क्या मतलब होता है? हियर वी हैव टोटल it is starting from 20H and the last one is 2FH. तो ये जो पहला लोकेशन है, ये लोकेशन का एड्रेस क्या है? ये लोकेशन का एड्रेस है 20H. ये 20H में you have 8 bits 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो ये 8 bits is equals to 1 byte. 8 bits is equals to 1 byte. सिमिलरली एक दूसरा एड्रेस है, इसके बाद तुरंत कौन सा आता है? 21H. इसको भी वही है, 8 बिट्स है. इसका मतलब ये भी 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट. डॉट 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 लास्ट में आएगा. ये एड्रेस लोकेशन क्या है? 2FH. ये भी वही है, 8 बिट. अगर मैं देखूंगा कितने बाइट से, तो ये फर्स्ट बाइट, ये सेकेंड बाइट, डॉट 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 डॉट, ये आएगा आपका 16th बाइट. ये आएगा आपका 16th बाइट. ओके, और ये आपके ये एड्रेसेस आप अगर देखोगे, ये टोटल 16 एड्रेसेस रहेंगे. 20H से लेके 2FH, तो बीच में है 21H, 22H, 23H, डॉट 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 2FH. So total how many bytes you have? You have total 16 bytes. And you know 1 byte is equals to 8 bits. Therefore 16 bytes is equals to 128 bits. So Okay, sir, got it, sir. got it. Okay. अभी ठीक है, अभी इसमें आपको मैं ये भी बता देता हूँ बिट एड्रेसेबल का क्या मतलब होता है. प्लीज पे अटेंशन. ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है बिट एड्रेसेबल एरिया, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको. I want everyone to pay attention. Okay. Bit addressable का क्या मतलब होता है? I am explaining. See here now. There are two addressable. Okay. One is called as byte addressable, and other one is called as bit addressable. Bit addressable. Okay, bit addressable. Now when you talk about the bit addressable, when you talk about the bit addressable, here you have to take care that what do you mean by bit and what do you mean by byte. What do you mean by bit and what do you mean by byte? Okay. Now to make you understand this, to make you understand this, if I am talking about this bit addressable, now here I have drawn 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Now this area, this total area is called as a bit addressable. इसका मतलब, for example, I want everyone to pay attention. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है. Okay, I want to change the content of this bit. I want to change the content of this bit. यहाँ पे अगर 1 है, उसको मुझे चेंज करके 0 लाना है. ठीक है, ये जो 1 दिख रहा है आपको, उसको मुझे चेंज करके वापस 0 लाना है. So how do you change that? That is the other way. That is a the other part. How do you change that 1 to 0? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 1 है और ये यहाँ पे जो मुझे चेंज करना है, ये लोकेशन का क्या एड्रेस है? ये लोकेशन का क्या एड्रेस है? ओके, ये लोकेशन का क्या एड्रेस है? I can change this 1 to 0 only because this area is bit addressable. This area is bit addressable. अगर ये एरिया बाइट एड्रेसेबल रहता, ये एरिया अगर बाइट एड्रेसेबल रहता, then I do not have the provision to change a single bit. I have a provision to change all these 8 bit at a time. That is the difference between the byte and bit. Again I am repeating, if you want to change a single bit, बाकी के बिट्स वैसे के वैसे, बाकी के बिट्स वैसे के वैसे, सिर्फ ये बीच वाला बिट मुझे चेंज करना है. That can be only possible if this is bit addressable. Bit addressable. Okay.
That is, if it is bit addressable, then only I can change this. Other bits will be the same. लेकिन अगर ये बाइट एड्रेसेबल रहता था और मुझे सिर्फ यही बिट चेंज करना है तो वो नहीं कर सकता था. For in that case, I have to completely change this byte. I have to completely change this byte. Okay, to explain you this in more in a proper way, I have to show you one diagram. In that case, it will be more clear. Please pay attention now. Yes, see here now. See here, all of you. आपको मैंने जो अभी पढ़ा रहा था मैं, the thing which I was explaining you. Okay, the internal RAM. This is the internal RAM. पिछला diagram और diagram, it is one and the same. But see here, 00 address. That means R0. That means you are talking for bank 0 register. Bank 0 register will go from R0 to R7. The address is from 00H to 07H. Bank 1 address is from 08H to 0FH. Bank 2 is from 10H to 17H. And bank 3 is from 18H to 1FH. Okay, अब ये देखो आपका ये हो गया रजिस्टर बैंक. ये पूरा एरिया है रजिस्टर बैंक का. तो कैन आई से इट इज फ्रॉम 00H to 1FH. आपका 00 यहाँ पे है और आपका 1F यहाँ पे. So it is from 00H to 1FH. ये हो गया. अब बिट एड्रेसेबल की बात कर रहा हूं. ये देखो बिट एड्रेसेबल. बिट एड्रेसेबल कहां से कहां तक है? इट इज फ्रॉम 20H से लेके 2FH. अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर दिखा सकता हूँ बिट एड्रेस. सी हियर, ये आपका सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका एड्रेस है 2A और 2A के एड्रेस में आपका ये टोटल 8 बिट्स और ये आपके टोटल 8 बिट में ये जो लोकेशन है यहाँ पे मुझे चेंज करना है. सपोज यहाँ पे आपका 1 था, उसको मुझे निकाल के वापस 0 करना है. एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज दिस एरिया इज बिट एड्रेसेबल. Because every bit has an address. Every bit has an address. If I ask you, tell me the address of this, it is what? It is what? It is 54. It is 54. How do you get 54? See here now. How do you get 54? See here now. Can you see here 20H? Yes. So 20H में आपका internal bit address is starting from 00. Can you see here 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 09 के बाद 10 नहीं आएगा. It is 0A, then 0B, 0C, 0D, 0E, 0F. 0F के बाद आता है 10. See here 10. Then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Then 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. 1F के बाद आता है 20. Now these 20 and these 20 are different. This 20 is said to be byte address. क्योंकि ये पूरे बाइट का एड्रेस बता रहा है और ये 20 जो है वो है बीट एड्रेस. ये 20 can I say this 20 is a bit address for the byte address of 24. For the byte address of 24. इसका मतलब 24H या फिर 24H जो बाइट एड्रेस है उसमें फर्स्ट बीट का एड्रेस है 20H. फर्स्ट बीट का एड्रेस है 20H. वैसे ही मुझे अगर ये 54 है, ये दिख रहा है आपको. सो दिस 54 इफ आई हैव टू चेंज, अभी वो चेंज कैसे करना, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. लेकिन ये 54 में मैं 1 का 0 करना है तो आई कैन डू, बिकॉज दैट इंडिविजुअल बीट इज हैविंग सम एड्रेस एंड दैट इंडिविजुअल बीट एड्रेस इज 54. और ये 54 जो बीट एड्रेस है वो कौन से बाइट एड्रेस का है? दैट इज ऑफ 2AH. दैट इज ऑफ 2AH. टू बी मोर डिटेल, 2A जो बाइट एड्रेस है इसका फर्स्ट बीट का बीट एड्रेस है 50.
सेकेंड बीट का बीट एड्रेस है 51, थर्ड बीट का बीट एड्रेस है 52, फोर्थ बीट का बीट एड्रेस है 53 और फिफ्थ बीट का बीट एड्रेस है 54। तो मेरा फिफ्थ बीट का जो बीट एड्रेस है वो 54 है और वो बीट को मुझे चेंज करना है। सो wherever can you see it is written here bit address and here it is written as a byte address. So whatever you see here, these are all byte address, and whatever you see here, these are all bit address. तो जो एरिया बिट एड्रेसेबल है इसका मतलब हम इंडिविजुअल बिट को चेंज कर सकते हैं, ओके। और जहां पे बाइट एड्रेस लिखा है और जो एरिया बाइट एड्रेसेबल है इसका मतलब हम वहां के इंडिविजुअल बिट को नहीं चेंज कर सकते, हमको पूरा का पूरा बाइट चेंज करना पड़ता हम कर सकते। इंडिविजुअल बिट आई कैन नॉट चेंज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज आस्क। If you have question, please ask. I'll be happy to explain you once again. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो, but you should be confident with the understanding of what is bit address, what is byte address. Okay, that things are very important. Yes. I'm waiting for your response. Please acknowledge something. Yes, no, proceed, something. Yes, sir. Proceed. Shall we proceed? Yes, sir. Okay. So this is called as a bit address and byte address. This is the difference between the bit address and the byte address. Okay. Okay. Now again come back. You have told me that your internal RAM is of 128 bytes. It is of 128 bytes. Okay. If I ask you the question, your internal RAM is of 128 byte, and if I ask you the question, I want the question is open to everyone. And if I ask you, tell me the starting address and tell me the ending address to cover all these 128 bytes, what is your answer? Again, I am repeating. You have told me that your internal RAM is of 128 bytes. Then tell me the starting address and tell me the ending address. I can say the starting address is 00H. Now you have to tell me the ending address. 7FH. Yes? 7FH. 7FH. How do you get 7FH? So if you 8 into 16. 8 into 16. 0 to 16 हुआ ना, तो फिर 0 से लेके 0 मतलब 0F. हाँ. फिर 10 से लेके 1F. हाँ. ऐसे. Very good. Very good. 8 बार में तो 816. Yes. Right. Yes, pay attention now everyone. 128 bytes. Your starting address is 00H. Can you see your starting address is 00H? Yes. Okay. And your 128 bytes you have to cover. So 128 bytes you have to cover. That means you have to go from 00 till 7FH. Okay. 7FH. अभी आपका starting 0 यहाँ पे. मैं वहां पे नहीं दिखा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. Can you see your 00H? And can you see your 7FH? So this is your 128 bytes internal RAM. So starting address is 00 and ending address is 7F. ये अगर आप आराम से शाम के टाइम पे चाय पीते पीते जब देखोगे, you will be able to see that there are 128 bytes. 128 bytes. Okay, 128 bytes कैसे 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट 5 6 7 8 9 10 इसके भी if you go on
ये भी सब कैलकुलेट करोगे, ऐसा करते करते आप 128 बाइट तक जाओगे तो लास्ट आपका एड्रेस आएगा 7F, लास्ट आपका एड्रेस आएगा 7F। ओके, सो 128 बाइट्स यहां तक है, 128 बाइट्स यहां तक है। तो 128 बाइट्स में क्या क्या कवर हो रहा है? 128 बाइट्स में आपका रजिस्टर बैंक कवर हो रहा है, आपका बीट एड्रेसेबल रैम कवर हो रहा है, और आपका जनरल पर्पस रैम कवर हो रहा है, जनरल पर्पस रैम। ओके, जनरल पर्पस रैम। और इसके अलावा यू आल्सो हैव SFRs which is called as a special function registers, which are called as a special function registers। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का स्टार्टिंग एड्रेस कहां से है? इट इज फ्रॉम 80H और एंड कहां पे हो रहा है? FFH, 80H से लेके FFH। सो दिस इज अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, दिस इज अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। तो आपका 128 बाइट यहाँ पे खत्म हो रहा है, 00 से लेके 7FH और 80H से लेके FFH तक, ये आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। नाउ इफ आई आस्क यू, अगर हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को भी इंक्लूड करते हैं तो यू हैव गॉट दैट योर स्टार्टिंग एड्रेस विल गो फ्रॉम 00H टू FFH। कैन यू सी योर FFH? यस। नाउ इफ आई आस्क यू, टेल मी द टोटल साइज, व्हाट इज योर आंसर? 256 बाइट। 256 बाइट, यस, 256 बाइट, 256 बाइट। ओके, यानी इसका मतलब है आपका जो इंटरनल रैम 128 बाइट का है, ओके, आपका जो इंटरनल रैम 128 बाइट का है, तो 128 बाइट आपका जो है वो यहाँ तक है, और एक्स्ट्रा जो 128 बाइट है तो ये है 128 बाइट और ये आपका 128 बाइट। तो ये इंटरनल रैम जो है वो आपका 128 बाइट जनरल पर्पस रैम तक कवर करता है, और उसके बाद का जो 128 बाइट है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है, वो आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। ओके, सो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स क्या होता है, दैट थिंग आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। आई एम जस्ट गिविंग यू द the structure of your RAM, the structure of your RAM। okay, so let me go back to the previous this one जो हम ले रहे थे अब तक। yes, this one। yes, is my screen visible to everyone now? यस सर। हाँ, ये देखो, मैं आप ये जो इंटरनल रैम बता रहा था, ये देखो 128 बाइट्स। देखो स्टार्टिंग लोकेशन 00H, एंडिंग लोकेशन 7FH, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3। बिट एड्रेसेबल एरिया अभी मैंने लिया, इसका ये देखो स्टार्टिंग एड्रेस 20H से लेके 2FH और 30H से लेके 7FH आपका जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। और 7F के बाद क्या आता है? 7F के बाद क्या आता है? 80। कैन यू सी हियर 80 हियर? ये देखो 80, ये है आपका 80। तो 80 से लेके FFH मैंने आपको पहले बताया था, दे आर कॉल्ड एज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, SFR, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। तो कितने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है? ये जो दिख रहा है आपको, ये सब DPL, DPH, PCON, TCON, TMOD, TL0, TL1, TH0, TH1, ये सब जो दिख रहे हैं, ये these are all स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। और ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कौन कौन से एड्रेस पे है, this thing also you have to by heart, this thing also you have to by heart। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलता हूँ PSW के बारे में मैंने आपको जरा सा बताया, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ओके, वो उसका बाइट एड्रेस देखो क्या है, D0H। तो मैं अगर बोलता हूँ कि PSW का बाइट एड्रेस बताओ, तो यू शुड से D0H। दूसरी और बात, आपको दिख रहा है यहाँ पे एस्ट्रिक, 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 यहाँ पे एस्ट्रिक,
ये दोनों को एस्ट्रिक नहीं है. कैन यू सी द एस्ट्रिक हियर एट द एंड? Yes, sir. हाँ, ये एस्ट्रिक का मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एस्ट्रिक का मतलब होता है दैट particular byte address is also bit addressable. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ. See all of you. इसका मतलब क्या है? इसको जरा सा इलॉबरेट करता हूँ. हाँ, नाउ see all of you. यहाँ पे आपको एस्ट्रिक दिख रहा है. एस्ट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया था बिट एड्रेसेबल. तो ये PSW जो है ये है आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. टोटल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. टोटल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या है, उसको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्यों कहा जाता है, दिस थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो इन दिस आई हैव टेकन वन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर दैट इज PSW. ये PSW का बाइट एड्रेस जो है वो D0H है और उसके यहाँ पे एस्ट्रिक दिया है. इसका मतलब एस्ट्रिक का मतलब है दिस एरिया इज बिट एड्रेसेबल. इसका मतलब ये जो आपको PSW दिख रहा है ये 8 बिट का है ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक लोकेशन 1 बाइट का है. तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आपका PSW है. और ये PSW का एड्रेस बाइट एड्रेस क्या है? D0H, बराबर है. और यहाँ पे आपको एस्ट्रिक है. इसका मतलब ये PSW इज ऑल्सो बिट एड्रेसेबल. इसका मतलब इसमें का इंडिविजुअल बिट आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो. यहाँ पे 1 है तो इसको 0 करना है, कर सकते हो. यहाँ का इंडिविजुअल बिट को चेंज करना है, कर सकते हो. क्यों कर सकते हो? बिकॉज दिस PSW is bit addressable. It is a bit addressable. Okay. The same if you see here, sbuff ये भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है. ये sbuff ओके कौन से एड्रेस लोकेशन पे? इसी पे मैं बताता हूँ. ये आपका है sbuff. ये कौन से बाइट एड्रेस पे है? 99H. यहाँ पे एस्ट्रिक दिख रहा है? नहीं. इसका मतलब ये बिट एड्रेसेबल नहीं है. इसका मतलब मैं इंडिविजुअल बिट को चेंज नहीं कर सकता हूँ. मुझे अगर SBF को चेंज करना है तो आई हैव टू चेंज 8 बिट एट अ टाइम. यानी मुझे ये 8 बिटों को एट अ टाइम मुझे चेंज करना है. और बिट एड्रेसेबल में होता है कि मैं इंडिविजुअल बिट को चेंज कर सकता हूँ, यानी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं. एक इंडिविजुअल बिट को मैं चेंज कर सकता हूँ. लेकिन बाइट एड्रेस में अगर आपको ये चेंज भी नहीं करना है, लेकिन आपको ये चेंज करना है, तो ये और ये 2 बिट सेम रखो, ये तीनों बिट सेम रखो, ये लास्ट वाला बिट सेम रखो, और इसको अगर चेंज करा ये चेंज करो, और ये पूरा होने के बाद ये एट अ टाइम ये 8 बिट को वहां पे आप ओवरराइट कर सकते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ बाइट एड्रेसेबल एंड बिट एड्रेसेबल. एनी क्वेश्चन? Yes, any question, any doubt? No, sir. Okay, I think we can stop. It is 12:10. किसी की तरफ से क्वेश्चन नहीं है? यानी मैं जो सिखा रहा हूँ बराबर आपके दिमाग में जा रहा है? Yes, sir. Okay, good. So मैं आपको क्या अभी I was explaining you SFR. तो मैंने आपको इंटरनल रैम पढ़ाया 128 बाइट्स. ये 128 बाइट्स जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है, ओके, उनका एड्रेस स्टार्टिंग होता है 80H से लेके लास्ट FFH. ओके, तो ये देखो यहाँ पे बिट एड्रेस है और यहाँ पे बाइट एड्रेस है. तो ये सब आपके बाइट एड्रेस है और बिट एड्रेसेबल है. इसका मतलब जहां जहां पे एस्ट्रिक है वही बिट एड्रेसेबल है. ओके, और ये देखो बिट एड्रेस कैसे लिखा है? B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. So individual bits. Okay, individual bits. Now tell me आपका इंटरनल रॉम कितने, आपका इंटरनल रॉम की साइज कितनी है?
आपकी इंटरनल रॉम की साइज कितनी है? आपके इंटरनल रॉम की साइज बताओ। 4K 4 kilobyte. Yes, 4 kilobyte. So 4 kilobyte. So if it is a 4 kilobyte, then if I ask you, tell me the starting address and the ending address. Ending address and starting address. So starting address और ending address अगर मैं पूछता हूँ 4 किलोबाइट मेमोरी के लिए, तो कोई मुझे बता सकता है? ठीक है, starting address is 0000H. 0000H. Now tell me the ending address for 4 kilobyte. For 4 kilobyte. Okay, you will do this as a homework. Okay, it is 000H. So can you see here 000H? And see here your ending address 0FFFH. 0FFFH. Okay, 4 kilobyte. And यहाँ पे आपका 128 बाइट था, 128 बाइट था. ठीक है, if I ask you to address my 128 bytes, how many address bits you require? आपको कितना एड्रेस बिट्स चाहिए टू पॉइंट दिस 128 बाइट्स? कैन एनी वन ऑफ यू? ये देखो, आपने 00H लिखा था, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? दिस 0 मीन्स 0000 and this 0 means 0000. So total how many bits are there? 8. So can I say I require total 8 bits address? These are called as address bits. Total 8 bits or address bits are required. Tell me what is 2 to the power of 8? What is 2 to the power of 8? 256. Yes. Yes. 256. Tell me the unit. 256. Tell me the unit. No one. 2 to the power of 8 is equals to 256. But what? 256 what? It is 256. 256 bytes. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. नहीं समझा हाँ, समझा या नहीं समझा? नहीं समझा हाँ, ठीक है. See here all of you. Please be there with me for more 2 or 3 minutes. You have this internal RAM. Okay, you have told me this internal RAM is of 128 bytes. It is from 00H. 00H का मतलब होता है this 0 in terms of bits 0000, this 0 in terms of 0000. So total you require 8 bits. So total 8 bits are required. So they are called as address bits. They are called as address bits. So using these total 8 bits, हम कहाँ तक जा सकते हैं? For that you have 2 to the power of 8 is equals to 256 bytes. 256 bytes. By using 8 bit, I can address 256 bytes. Okay, so my starting address is 00H. Then what would be my ending address? What would be my ending address? FFH FFH. इसका मतलब F means 1111. This F means 1111. So 8 times 1. 8 times 1. So 00H to FFH. That means we can address 256 bytes. 256 bytes. Remember 00H to FFH. लेकिन आपके यहाँ पे क्या है? आपके यहाँ पे क्या है? ये देखो, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. आपका यहाँ पे क्या है? 00H से लेके FFH. ये देखो FFH.
00H से लेके FFH, लेकिन 256 में से 128 बाइट्स यहाँ पे है, तो 128 बाइट्स यहाँ पे, इसका मतलब 00H से लेके 7FH, और रिमेनिंग 128 बाइट कहाँ पे, वो आपके इधर है। तो रिमेनिंग 128 बाइट कहाँ से, 80H से लेके FFH। वैसे आपने मुझे बताया था कि इंटरनल रॉम आपका 4 किलोबाइट का है, 4 किलोबाइट का है। ओके, 4 किलोबाइट, टेल मी इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, 4 किलोबाइट कन्वर्ट इनटू बाइट्स, 4 kilobyte convert into bytes. This is nothing but, yes, किलोबाइट को बाइट में कन्वर्ट करो ना, 4000 बाइट्स, 4000 बाइट्स। तो आपका ये जो 4000 बाइट्स है ना, वो आपका 4000 बाइट्स है ना, that means it is 4 kilobytes. So you do not, you tell me how many address bits you require, you tell me how many address bits you require. 8 एड्रेस बिट्स में आपको पता है हम कहां तक जा सकते हैं, 256 बाइट्स तक जा सकते हैं। तो मुझे 4000 बाइट्स तक जाना है, तो मेरे पास कितने एड्रेस बिट्स चाहिए? सिंपल, ये आपका इंटरनल रॉम है, तो मुझे स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए। स्टार्टिंग एड्रेस के लिए पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि ये 400 बाइट्स को एड्रेस करने के लिए मुझे कितने एड्रेस बिट्स लगने वाले। जैसे आपने मुझे बताया था 256 बाइट्स को एड्रेस करने के लिए आई रिक्वायर 8 एड्रेस बिट्स। तो 8 एड्रेस बिट्स को यूज करके हम 256 बाइट्स तक जा सकते हैं। वैसे ही कितने एड्रेस बिट्स यूज करके हम 400 बाइट्स तक जा सकते हैं? एनीवन? It is 16. Yes, it is 16. So tell me, 2 to the power of 16 is equals to how much bytes? 65536. Yes, 6 bits. हाँ, कितना? 6 65536. हाँ, 65536। कोई मुझे बता सकता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स? या फिर ठीक है, छोड़ दो। 2 to the power of 16, 65536 bits. Can I say it is nothing but it is lesser than 4000 bytes? So can I comment that using the 16 address bits I can address 400 bytes? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. So can I comment the starting address would be 0000H. This is in hexadecimal. If I have to show in bits, this 0 will be 0000, this 0 will be 0000, this 0 will be 0000, and this 0 will be 0000. How many bits are there? How many bits are there? 16. So can you see here 16? So 2 to the power of 16 is equals to 65536. या फिर मुझे बताओ, with the 16 address bits, I can go from 000H in hexadecimal. Tell me the ending address. Tell me the ending address. Tell me the ending address. It is simple. ये सब 00, इसको सबको 11 कर दो। हाँ, तो कितना हो गया? ये सबको F कर दिया। ये 4F, सॉरी, ये 4 को 4 बोले तो इन हेक्साडेसिमल F. 4F, yes. So can I say F, 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 F? This is my ending address. F, 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 H. This is my ending address. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. So starting address is this, ending address is this. The total capacity is
2 to the power of 16, you have told me 65536 bits. तो इतने बिट्स की आपने बोला, लेकिन मैं अगर बोलता हूँ बाइट्स के बारे में बताओ, टेल मी इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, you convert this into bytes, you will be able to understand that you will go from, by using 16 bit of address, you will have how many memory size in terms of bytes आप कितना यूज कर सकते हैं. Okay, I think rest of the thing we will see in the next lecture. Is it fine? Yes, sir. Okay, just a minute. मनप्रीत अटेंडेंस हुआ क्या, एक बार चेक करो. Yes, sir. हो गया. हो गया ना, ठीक है. So if you don't have any questions, everyone can leave. किसी को अगर डाउट है, please stay here, stay back if you have any question.